Okay, hey everyone, welcome to our YouTube channel once again. Today we have Indu also with us for a Q&A. बहुत जोर जबरदस्ती करके लाया हूँ भाई, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लाया हूँ, बहुत सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था प्लीज इंदु मैम को भी लेके आओ. So finally she's here for Q&A. Welcome everyone to our YouTube channel. Those of you who are meeting us for the very first time, my name is Mitesh Khatri, that's my beautiful wife Indu. We are law of attraction coaches. I am people's coach, she's my coach, that's the chemistry. We've written this beautiful book together called The Law of Attraction. And today we are going to talk about how you can use law of attraction in multiple areas of your life. So whatever question you have, start putting your questions on the chat window now, because we are going to then display that question on the screen and we will answer one question at a time. So let's see what questions do you have. In the meantime, while people are putting in your questions over there, those of you who are here for the first time, if you want to know about our next video, make sure that you like, share, subscribe, and hit the bell icon so that you get intimation every time we do a YouTube video. Especially the next time Indu ma'am comes, you'll get an email from YouTube, especially so that you're able to come for the video. So now going to the questions. You like the first question? Here comes the first question. ये काम करते काम हैं करता है ना सर? अच्छा, ये काम करता है क्या सर? आई एम कंफ्यूज्ड. मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कभी कभी काम करता है, क्योंकि कभी कभी इतना ज्यादा काम करता है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ कि सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कर रहा है. नहीं, कभी कभी मुझे ये भी कंफ्यूजन होता है कि सब कुछ इंदू ही कर रही है मेरी लाइफ में. बट आई थिंक इसका जवाब इंदू देगी. नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ट्राई करके देखो। एज मिथिश बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। ट्राई करके देखो। छोटी छोटी चीजों पे ट्राई करो। जब छोटी छोटी चीजों पे ट्राई करोगे, काम करेगा, बिलीफ आएगा, फिर काम करेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्राई करके देखो। हाँ देखो, बहुत सिंपल साइंस है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है फ्रीक्वेंसी की वजह से. आप अगर रेडियो को ट्यून करोगे 93.5 पे, तो वो तो काम करेगा ही. क्यों काम करेगा? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. अगर आप अभी ये मोबाइल ले लोगे और मोबाइल लेके डायल कर दोगे नंबर, तो नंबर तो कनेक्ट होना ही होना है. क्यों कनेक्ट होना है? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना. इस मोबाइल नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है. आप उस नंबर को डायल करोगे तो उस इंसान को जाके कनेक्ट होना ही होना है. हाँ, अगर आप किसी आदिवासी को जाके बोलोगे जंगल में कैसा होता है, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको ये साइंस नहीं समझ में आता. लेकिन हम एजुकेटेड है, हमको पता है कि दुनिया में हर चीज एनर्जी एनर्जी से बनी है, उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है. तो बिल्कुल काम करता है, क्योंकि हमारे विचारों में, हमारे फीलिंग्स में भी फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी। करेक्ट. तो जब मैं इंदु से मिला था पहली बार, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, तो मुझे भी कंफ्यूजन था कि अप्लाई होता है कि नहीं होता है. तो इंदु ने एक्चुअली मुझसे ये सवाल पहली बार पूछा था कि तू सिखाता तो है, अप्लाई होता है, मतलब यूज होता है? मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं. तो पहली बार मैंने इंदु के साथ ट्राई किया तो हमारी शादी हो गई. फिर दूसरी बार इंदु ने मेरे ऊपर काम किया तो मेरा जॉब मिल गया. फिर हम तीनों ने मिलकर यूज किया तो मैंने इसकी जॉब छुड़ा दी. फिर हमने साथ में बिजनेस चालू कर दिया. तो देखो, हमारे लाइफ में तो बहुत काम किया आज तक, हमारी पूरी लाइफ. हमारी राइट. लाइफ में सब कुछ काम करता है। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ। आज मुझे बैंक में जाना था किसी चीज की वजह से। हमको पैसे निकालने थे और बैंक का कैशियर बोला कि मेरे पास में पैसे नहीं है करके। तो मैंने तभी वहीं बैठ के खड़े रह के मैनिफेस्ट किया। जब आज तक का ये एग्जाम्पल है. आज का एग्जांपल है। तो हमारे 2 चेक्स थे जिसमें हमको कैश कराना था और वो बोला मेरे कैशियर के पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे. तो वो बोला मैं आपको 1 चेक के हाँ, पैसे मतलब दे आधे सकता पैसे थे. हाँ. हूँ। आधे पैसे थे। 1 चेक के पैसे दे सकता हूँ, 1 चेक के नहीं दे सकता हूँ। मैंने वहीं खड़े रह के मैनिफेस्ट किया। 10 मिनट में एक बंदा डिपॉज़िट करने आ गया। सच में जब इसने मुझे बोला ना, तो मैंने इंदु बोली एक काम करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि कोई ना कोई इतनी देर में पैसे लेके आ गया डिपॉजिट करने के लिए, और वो पैसे अपने पास आ गए. मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है. फिर मुझे याद आया, डोंट आस्क हाउ. अपनी गोली खुद खाओ. तो फिर हमने बोला चलो ठीक है, मैनिफेस्ट किया मैनिफेस्ट करते हैं. मैनिफेस्ट किया और 10 मिनट में आई थिंक तीसरा या चौथा बंदा ऑन द कैशियर कोई आया 3.5 लाख रुपए लेके, और वो डिपॉज़िट करने आ गया और मेरा सॉल्व हो पैसे गया। आ गए. बहुत उसको मैंने पूछा करता है. डिपॉज़िट करना है? बोला हाँ। मैंने पूछा कितने पैसे? वो मुझे ऐसे देख रहा है कि मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ पूछ रही है? रही हूँ। तो हाँ, काम करता है, हमारे लाइफ में काम करता है. हमारी पूरी लाइफ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलाते हैं. राइट. अगला सवाल. हाउ कैन आई रिमूव नेगेटिव थॉट्स? ओके. बहुत सिंपल है। मेरा तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आपके पास नेगेटिव थॉट आए तो आप उसको सिंपली उस वक़्त पकड़ लो पहले तो। मतलब बी प्रेज़ेंट टू इट एंड वन्स यू आर प्रेज़ेंट टू इट से कैंसल कैंसल एंड सिंपली रिप्लेस इट विथ ईदर ग्रैटिट्यूड और विथ होप। आपको जो भी मन करे, आपका जो भी उस वक़्त मन कर जाए वो कर लीजिए। करेक्ट. तो पहला सवाल ये है, ये थोड़े क्वेश्चंस ठीक से दिख नहीं रहे हैं. हाँ, लेट्स सी इफ आई कैन टेक केयर ऑफ दैट राइट नाउ. बैकग्राउंड बैकग्राउंड यहाँ पे जो था वो वाइट नहीं हो रहा था. लेट्स सी. चलो फिलहाल तो लेट्स डू विथ व्हाट वी हैव, क्योंकि मुझे इसके पोजीशंस नहीं समझ में आ रहे थे. चलो ठीक है. सो इंदु ने जो आपको जवाब, हाँ ना, दिस इज लुकिंग मच बेटर. सो इंदु ने जो आपको सवाल का जवाब दिया बिल्कुल सही है. साथ में एक और जवाब ये है कि यू कैन नेवर स्टॉप नेगेटिव थॉट्स, बट यू कैन स्टार्ट पॉजिटिव थॉट्स. रिप्लेस इट। मतलब उससे सिर्फ एक ही होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी। यू कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ थिंकिंग नेगेटिव एंड यू कैन स्टार्ट कैचिंग योरसेल्फ।
So, for an example, if you're thinking negative about your goal, don't stop that negative thinking. Just replace it with a positive thought, saying, my goal is already achieved. When you say, I don't want to think negative, I don't want to think negative, you can't stop that. Exactly. When you say, this goal is achieved, this goal is achieved, this goal is achieved, it's a positive thought. It's very easy to do that. Okay. So that's for that question. Next question is for Neha. How can I do all my duties like cooking, taking care of my health, kids, family, along with new learnings, and taking care healing classes all efficiently? Yeah, this is efficiency queen can answer this question. Okay. Very simple. I live on to-do list. My reminder list is always full. If I remember any work, I just open my reminder and put it. I tell Siri, just record it in the reminder and put it in the reminder. I survive on the reminder. So that way it is completely organized and I don't miss anything. I also schedule it whenever you need to go for something. Like this call is scheduled call, 5 o'clock. So I schedule it. It was there in the calendar. It is there on the calendar. So I schedule it, I go with the to-do list. If I go with the to-do list, everything happens very peacefully. Second, of course, you can start saying, I'm super efficient, I'm super productive, Good. I can do multitasking very easily, Affirmations. effortlessly. You can keep saying it. I say that I'm very good at multitasking and I'm good at multitasking. So start saying it so you believe it. So affirmations karo. Plus, along with that, start doing what Indu is saying. Create a to-do list. I've created a special video on this, right? On your हाँ request. जी, अभी 2 हफ्ता पहले. 2 हफ्ता pehle we did a special video on time management. So go to YouTube later, type in Mitesh Khatri time management. You'll see a detailed video on this. Yeah, just few days ago only we did it. Yes. Hi, sir. Hi, Sudeepa. Hello. Okay. Hi, Monali. Sir, big time. Raman, big time to you too. Thanks for you, sir, for your most welcome. How to manifest good health? Very simple. Just say I'm healthy and fit. All my organs are working fine. I am at my perfect weight. I'm having a perfect figure. Mm, My what do you call it? My health, my skin, hair, everything is looking very, very well. Simple. So very important to create specific affirmations for the outcome of your health. What is good health for you? For me, good health might be doing push-ups every day and doing squats every day. For you, good health might be you're able to walk half an hour every day. What is good health for you? Or you have a exact weight. So body weight might be the good health for you, right? Like, okay, I'm right now at my exact ideal body weight of 80 kgs. 80 to thoda zyada ho jayega. 60 kgs. I am able to walk half an hour every day. I'm able to eat healthy food every day. My stomach is healthy and fine because some of you have a lot of acidity problems. Some of you have some sugar problems. So what is health for you? Specify that, clarify that, and then create end result affirmations as per that. I've created a special video on this on health affirmations. Go to YouTube later and type in Mitesh Khatri health affirmations. You'll find a section on that. Yeah. Okay. And plus, remember, if you're doing it for, say, diabetes or, say, BP, don't say that I don't have diabetes. Remember that. You have to say that I'm healthy and fit. Okay. My sugar levels are not. Yeah. Sir, big fan, want to know the flow of home program. Well, the flow of home program is available on our website, miteshkhatri.com. I hope you're asking about the digital programs. That's what I'm understanding here. Simply go to miteshkhatri.com. And at the end of this video today, we will be giving you an invitation to come and join one of our home programs. It's a 2-hour webinar, completely free. We'll invite you for that. 3 hours? Okay, that's a 3 hours we are doing. It's completely free. You can do it from home with a convenient time for you. And that's it. So I'll see you there, and then I'll give you more details in that video. Okay, how to recover the money invested? Okay, you can chant hope not no for money. You can chant hope not no for the party you have invested in. So, for example, say I have invested in Mitesh, so I will chant for Mitesh. I will chant for the money. I'll hold an image also that Mitesh has already got enough balance in his account, and he's Correct. calling me and telling me, "Give me your bank account. I have to transfer the money which you have invested with me. I'm transferring along with the extra money you made." Something on those lines. So you hold a visualization, visualize it every day. At the same time, uh, do hope no for Mitesh, do hope no for money. Third, an important thing is when you're thinking about that money, don't get worried, don't get anxious, don't get fearful about it. Whenever you're thinking about money, even if that thought comes, say cancel, cancel, and replace it with a hope no. So these are very important inputs. What Indu said, the first one, do hope no for the other person. Normally, when we want to recover the money, the way we think about that other person is very negative. We hate them. We sometimes feel bad about them. But here, what she's saying is do hope no for them. So you're transferring a lot of positive energy. And then every time you're during the day thinking about money, you're stressed, you're worried, kab aayega, kab aayega. Instead of that, say cancel, cancel what she said. Add some beautiful thoughts to that.
We have a platinum member. I mean, we have many platinum member who did it. But recently, there is one businessman. He had given 50 lakhs to a relative of his and close relative, and he really thought the money will not come back. He had written off the money in his mind, in his records, everywhere. And one fine day, the person calls and says, "Chai pine aa raha hu," and he comes with a bag full of 50 lakh rupees. True story. Amazing how it works. Start doing hope noop for the other person. Perfect. Next question. How can I do all my duties? I think we took care of this. How to focus on study? Vishal Giri. Very simple, Vishal. There are two, three things. One, of course, keep your phone away. Second, stay away from TV also. Third, you say that I'm super focused. Fourth, uh, create a vision for yourself. I mean, if I were you, I would create a vision. Why are you studying? What is going to happen if you study successfully? Say you are doing an engineering, then what will happen after doing an engineering? You will get a job, you will have a good life, you will go in a very good college or for post graduation. Whatever is the vision, hold that vision first, create that vision, motivation for yourself, and look for that vision when you End are studying. result. End result. End result, as in really end result, as in job or post graduation, whatever you are looking for, and then study and keep saying, I'm super focused at my studies. So two inputs here. Before you study, see hota kya hai na, when we are studying, whenever we are doing some task, the reason we are demotivated is because we are completely focused on the task. We have forgotten the reason of doing that task, End result. the end result. We've forgotten why we are doing it. So sit at one place before you open your books, close your eyes, and imagine that you've already passed. Imagine that how you're feeling after you passed. Imagine that vision which Indu said about celebrating with your friends, getting a job already, and how you're feeling so good that thank God I did my studies today. I have my job because of that, right? So feel that, visualize that, and then start your studies. Along with that, when you're doing your studies, it's very important that during the studies you keep saying what Indu said: I love my studies, I'm very interested, I'm fully focused. Because normally what happens is when we're doing studies, we keep repeating negative thoughts. I can tell you because I did that a lot in my childhood times. I wish I knew law of attraction when I was in school. But you have to keep saying, instead of saying, yaar, bore ho raha hai, I'm not enjoying this, I'm not understanding this, instead of replace it with stay positive statements like I'm super focused on studies. Studies is amazing. It is going to create a huge future for me. I'm understanding everything. I'm understanding. This is so easy. This is so easy. This is so easy is so important to say that the subjects are so easy. This is so easy. I'm understanding. Like a maths वाला example बोलो. That's all example. हाँ. Okay, machine drawing wala. हाँ. So, machine drawing, I was not very comfortable in my engineering. I think it was in first year. So I went home once from hostel and I told Papa that machine drawing is not comfortable. My dad said, "Who told you this?" I said, "Every senior member says that machine drawing is not easy." My dad said, "From today, start saying machine drawing तो बहुत easy है. मुझे बहुत आता है machine drawing. बहुत अच्छे से आता है." Believe it or not, I scored 198 out of 200. I still remember the score. But that's because my dad gave me just one line saying that machine drawing बहुत easy है, बहुत easily आता है. And सचमुच it became super easy. Of course, that time I did not know law of attraction, but I think my dad knew. So this is a good lesson not only for the students here but also for the parents here. Many times you end up telling your children saying, "Beta पढ़ाई करो, बहुत मुश्किल है maths. Maths is very difficult. You must focus more on studies of maths. You're weak in maths." ऐसे मत बोलो. Do what her father did. Tell them that it's very easy. You understand things easily. 5 minute भी बैठेगा तो सब समझ में आ जाएगा. You are anyways very good at maths. Do a lot of positive reinforcement for your children. Okay. So that is for studies. And this is a good question. Do we have any age restriction? I am 65. No, We no, have Shaji. at least 20 members in Platinum. 60 plus. We have 60 a lot of plus. people, 20, 25 members in Yeah. Platinum who are 60 plus. Yeah. Ladies and gents. Yeah, both. men, women, Men. combination of that. In fact, this is one 65-year-old gentleman. Since in Platinum we work on HRCM, which means health, relationship, career, and money. One of the things we say is even in health we must have 5-star standards. So when Ravi ji joined us, he could hardly do even 5 push-ups at that time. Today he's able to do 50 push-ups. So it's because even at the age of 65, he's able to take his health to the next level because it's absolutely possible. There is no age limit. Right? Absolutely. Absolutely. You want to talk about your age? No. No. How old does she look? Everyone, let's do one thing. Type it in the chat window. I'll not give you the answer now. Let's see. Type it in the chat window. How old do you think Indu looks? Okay. I'm 43 years old. I'm giving you a hint. How old do you think she looks? Do I look 43? Nobody writes in the chat, I look 50. Okay. I'm telling you now. Otherwise, I'll stop doing the Q&A next time. Okay. All right. Just having fun. Uh, I have enrolled for 30 days, but hardly anything came from your end. Kindly check.
So Monali, nothing comes from our end. Everything comes from, you have to receive from System. your end. It's a system generated email. You have to receive that email in your inbox. There is a Zoom link every day that you get at sharp 9 p.m. every day. I log into that Zoom link and you just have to connect, practice with me. If you have not got an email, there is only one reason behind that. When you registered, You email is wrong. you put in a wrong email ID. 110%. Just write an email on contact@miteshkhatri.com, contact@miteshkhatri.com, and somebody from my team will look into it and tell you what happened. Okay, because our system is quite robust and it works perfectly fine. Perfectly fine. Huh? Yeah. So just everybody who has any problem, remember this is only for technical reasons. We personally don't access this email ID. This is only for people who've joined and they have any login ID problems and stuff. Like for an example, Vishal here. All you need to do is put in a message here, contact@miteshkhatri.com. I've put in a double M by mistake. So please ignore that. Contact@miteshkhatri.com and my team will get back to you immediately. Okay. Here we go. Next question. Good evening, says sir and ma'am. Good evening. Good evening. Next question. Uh, Please, प्लीज सर ma'am. माँ जब भी एफर्मेशन माँ जब भी एफर्मेशन कर मैं जब भी एफर्मेशन करती हूँ, डेथ लोगों की बातें याद आती हैं, बुरे चिंता आते हैं, कैसे अच्छी चिंता लाऊं? अच्छी चिंता क्यों लानी है आपको? मुझे तो पता ही नहीं था अच्छी चिंता होती है। वैसे अच्छा वर्ड है। चलो आज से अच्छी चिंता करेंगे। अच्छी चिंता करेंगे। जवाब। बहुत सिंपल है। जब भी आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, से कैंसिल कैंसिल, एंड उसके बाद में आप होप नोक नो करिए। पहली बात तो उस जो भी थॉट उस वक्त आया, उस थॉट को सोच के होप नोक नो कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको अफर्मेशन करने से आ रहा है तो सिंपल है, अफर्मेशन को रिकॉर्ड करो, रात को चला दो। आपको थॉट आएंगे नहीं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। आपका कॉन्शियस माइंड जो आपके थॉट्स को लाता है, अच्छी चिंता को लाता है, वो लाना बंद कर देगा। ठीक है ना? इसके साथ में उस वक्त ना जब आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जल्दी से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्ट करना है। मतलब क्या? अभी आप नेगेटिविटी में हो, तो आपको उसको जल्दी से पॉजिटिविटी में लाना है। तो क्या करोगे? जल्दी से हाथ ऐसे लो, सब लोग होप नो तो बाद में करेंगे ना, पहले तो बॉडी लैंग्वेज से इंटरप्ट करना है। तो सब लोग जरा हाथ ऐसे लो, आप भी ले लो इंदु, हाथ खुद के चेहरे पे रखो और हो बोलो हो कूची 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 कूची। अब नेगेटिव सोच के दिखाओ। हाँ, अच्छा ठीक है, ये लो, कूची 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 कूची। अब नेगेटिव सोच के दिखाओ, नहीं आएगी नेगेटिव थॉट, है ना? तो आपकी वो क्या नेगेटिव चिंता नहीं, बंद हो अच्छी जाएगी चिंता। और अच्छी वाली चिंता चालू हो जाएगी। अभी देखो इंदु को अच्छी वाली चिंता हो रही है कि ये मुझे सबके सामने कूची कूची कर रहा है, मुझे तो अच्छी वाली चिंता हो रही है, मेरी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आप करो, कूची कूची करो। इसके बाद फिर जैसा इंदु ने बोला होप नो करो, बहुत अच्छा हीलिंग एनर्जी टेक्निक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप आज के जो हमारा एक वो वेबिनार मैंने अभी बताया ना, एक काम करते हैं, लोगों को अभी उसकी लिंक दे देते हैं। तो ये जो हमारा वेबिनार है, ये कंप्लीटली फ्री है, 3 घंटे का कोर्स है आप लोगों के लिए, पूरा फ्री है हमारी तरफ से। आपको इसमें कोई पैसे नहीं भरने, आप बस आइए, रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद में एंड पूरा 3 घंटा देखना आपको। अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है तो उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो तीसरे घंटे के एंड में ना, पूरा समझने के बाद, दो पूरा घंटे कोर्स के करने बाद के बाद में, 2 घंटे के बाद जो लास्ट का हिस्सा है, छोड़ना मत, पूरा 3 घंटा देखना। तो लास्ट के कहीं आधे घंटे में हम लोग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिलीजिंग नेगेटिव एक्सपीरियंस। जरूर करना। उसके बाद आप देखो आपकी सारी नेगेटिव चिंता खत्म हो जाएगी, अच्छी वाली चिंता चालू हो चालू हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, ये मुझे वर्ड बहुत अच्छा लगा, पकड़ के रखूंगा। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट वन। मोनाली, सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी क्या के लिए क्या क्या करें? पहले तो स्टार्ट सेविंग। आपने Very अगर हमारा वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो उसमें हम बहुत अच्छे से मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो आप वो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन किया है तो मनी मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम मॉड्यूल फिर से मॉड्यूल जाके देखिए। देखिए। उसमें हम आपके मतलब अच्छे से आपका प्लानिंग कर देते हैं, आपको सेविंग करना सिखा देते हैं, इन्वेस्ट करना सिखा देते हैं। अगर आपको हमारा नहीं ज्वाइन करना, किसी और का करिए, मगर लेकिन करिए। मनी मैनेजमेंट अच्छे से करिए, जिससे कि धीरे धीरे करके आपकी सेविंग होने लगेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, जब आप खर्चा कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, और ये मनी मैनेजमेंट में आ जाता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इतना पैसा मैं इस चीज के लिए खर्चा करूंगा, इतना इसके लिए, तो उतना ही खर्चा करिए। उस टाइम पे अगर कुछ और आता है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत जाइए। आप रोक लीजिए अपने आप को और फिर नेक्स्ट मंथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होना, बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि सर मनी मैनेजमेंट तो बाद में करूंगा ना, पहले पैसे तो आ जाए। स्टेबिलिटी आएगी तो मनी मैनेज करूंगा। ऐसा नहीं होता है। हम एक बहुत अच्छे इंसान को जानते हैं, पानी पूरी बेचते हैं। पानी पूरी बेचने वाले के पास कितना पैसा हो सकता है? गोलगप्पे, गोलगप्पे, कहीं नॉर्थ में गोलगप्पे बोलते हैं, कैलकाटा में पुचका बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में पानी पूरी बोलते हैं। तो ये पानी पूरी वाला ठेले वाला बंदा है, आज कितने साल हो गए, 18 साल,
आज भी पानी पूरी बेच रहा है। I know him for since 97. तो करीब 25 साल से तो इंदु अब जानती है उसको, और अभी भी पानी पूरी बेच रहा है, लेकिन अपनी बेटी की शादी कराई, बेटे को बुलेट दिलाई, दोनों की पढ़ाई कराई, स्टेबल है, एकदम फाइनेंशियली एकदम स्टेबल है। कैसे? मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है बंदे का, बहुत अच्छा है। बहुत He अच्छा है। just has one कार्ट, छोटा सा कार्ट है उसका पानी छोटी सी गाड़ी है पानी पूरी की, बहुत अच्छी मनी मैनेजमेंट करता है। तो पहला जो लेसन है ना, बहुत सारे हम लोगों का ये है कि हमको जो पैसा मिल रहा है जिंदगी में, पहले उसको कुछ इस तरीके से मैनेज करना शुरू करो कि उसमें से सेविंग्स आना शुरू हो। 500 रुपए से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। हाँ। उसके बाद मनी अट्रैक्शन के लिए एफर्मेशन शुरू करो। मैंने एक खास वीडियो इसके ऊपर बनाया है यूट्यूब पे, बाद में जाके टाइप करना मितेश खत्री मनी एफर्मेशंस। पैसे को रिलेटेड हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर करनी बहुत जरूरी है। तो स्टेबिलिटी के लिए जैसा इंदु ने कहा, हमारा वेल्थ मास्टरी कोर्स ज्वाइन करो, हम उसमें और डिटेल में आपको समझाएंगे। हमारे इनफैक्ट 2-3 प्लैटिनम मेंबर्स हैं जिनका मनी मैनेजमेंट इतना बुरा था कि मैंने एक्चुअली उन जब उन्होंने जॉइन किया तो उनका 500 रुपए महीने से मैंने सेविंग चालू कराया। प्लैटिनम में मानो। प्लैटिनम मेंबर है, 500 रुपए महीने से मैंने सेविंग चालू कराया था उनका। आज की डेट में उनकी सेविंग बहुत अच्छी हो गई है, बट मतलब उनके 500 रुपए भी महीना सेव नहीं हो रहा था, सोचिए आप। तो मनी मैनेजमेंट इज दी और फिर मनी अट्रैक्शन सिस्टम, हाँ, फिर मनी। फिर एफर्मेशंस करो वगैरह। ठीक है, डन। अमित, write affirmation for selling home with love and gratitude. I have already sold my house for rupees 1 crore. I am so happy. I have invested rupees 1 crore with my HDFC Bank fixed deposit account. इट इज वेरी नाइस। छोटा सा input. अफर्मेशन इज वेरी वेरी नाइस। एक छोटा सा इनपुट है, पूरे 1 करोड़ एफडी में मत डालो यार प्लीज। उसको सेग्रीगेट करो, थोड़े से अच्छे रिटर्न्स वाली जगह पे भी डाल देना। एफडी में डालोगे तो बहुत रिटर्न्स नहीं आएंगे। थोड़ा म्यूचुअल फंड थोड़े में। से म्यूचुअल फंड में डाल दो, स्टॉक्स में डालो, या किसी और जगह डाल दो, गोल्ड में डाल दो, बट पुट इट इन डिफरेंट पैसा सेक्टर्स। हमेशा थोड़ा सा डिवाइड करके। डिवाइड कर लो, क्योंकि एफडी में आपको 3-4% मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। But I like your affirmation, Amit, because your affirmation has what you're doing with that money after you have already sold that property. Beautiful. वेरी नाइस। Awesome. How to use this technique? Oh, come and attend this course. It's a 3 hours course. I'll see you in the evening. Okay. Uh, I lost much in stock market trading. Can I recover with LOA? I would say you can. Yes and no. Excuse People me. have. People have. It's not that people have not, but if if you have invested in a blue chip companies, you will one point of time. He's talking about trading. But in trading, then it is difficult. But you can do hope no and take responsibility of your wrong decisions. I'm sorry. तो एक तो कुछ लोगों ने किया है, लेकिन ट्रेडिंग के मामले में मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वो आपका स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो मत करो. A lot of people are right now doing trading only because everybody is making money in trading. Don't get into it if you're not really an expert at it. That's one. Second, even if you lost money in that, focus on creating money, not recovering money. How much you must have lost on stocks? 5 lakhs, 10 lakhs. In the meantime, that it can be maybe crores. In the meantime, that you're constantly worried about recovering that and taking countermeasures, instead of that, focus on making money. In the same amount of time, you'll make double of that. And multiplying what you have currently, but not through trading. Okay. Focus on making money. Done. How to recover property investment? Same answer which we gave for recovering money. Right? Same answer. Hope no. Hope no. And hope no for the person who may be, let's say, troubling you, do hope no for them. Good evening, sir. No, Ayani. Okay. Virtual hug. Virtual hug. Virtual hug. That was cute. Hello, sir. My husband's consultancy money of rupees 50 lakhs has been stuck for 1.5 years. That man is very rich. Still he denies. Same answer. Recovery money के लिए जो आंसर था उसको आप फॉलो करिए. वीडियो किया है, यूट्यूब लाइव किया है फॉर रिकवरी मनी. So just type Mitesh Khatri recover money and you'll find it. Today only I shared that link with somebody. Just say Mitesh Khatri recover money. ये जो पॉइंट्स हमने बताए इंदु ने, उसी को डिटेल में समझाया है. बहुत ज्यादा 15 मिनट का वीडियो. 15 मिनट का वीडियो, and people have got lots of results. If you'll go in the comment section in the video later, you'll see people have recovered lakhs and lakhs of rupees by following those steps. However, just one more thing. Don't put too much energy in what you lost, because if you're putting energy in what you lost, then your focus is on loss. Constant. So I agree, you lost it and the person is not giving, but get your focus back on making, investing, multiplying what you have. Will Kajabi app be available for completion of 30 days DMP? No. So the app will be available. The course will not be available. Course will after 30 days. That is why it's called 30 days. You can renew although. Yes, you can renew.
Could I know the method of all the things one needs to do, like the gratitude list will be written down on a journal, or do I have to say? Okay, so gratitude list can be done both ways. You You can can say loudly also, you can write also, it really doesn't matter. It depends on your choice. Like there are some people who are more visual by nature, so they need to write. उनको देखना पड़ता है. But some people, if you just say it, it helps you. Like what like do you I do? just say. You just I say it, just say, right? but I used to when I started long years ago, I used to write. I used to write every day. I Remember, remember. I used to type. I still have that journal in Yeah. But now Excel. she says, so whatever helps you best, Whatever helps you. both ways works. You can Yeah. write. You can create a nice book out of it. Yeah. If you want more details, you want to practice with me, come for this seminar today, this 3 hour course. I'm actually practicing with you, Yeah, affirmations with you. So that's a great opportunity for you. and gratitude also. You practice. Gratitude also I'm practicing. कर्म करो फल की चिंता मत करो वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वर्सेस नहीं है, सेम है. वर्सेस नहीं है, सेम है. In law of attraction, the number one rule we say, don't focus on process, focus on end result. Don't focus on process, focus on end result. मतलब क्या? जब affirmation बनाते हो, make an affirmation that says, I have already got this goal. Don't make an affirmation, how will I get this goal? And after that, your action frequency has to be completely focused on work. On that work. काम पे ध्यान दो. अब end result तो हो गया ना? तो अब काम पे ध्यान दो, मन लगा के काम करो. दिस इज व्हाट वी ऑलवेज टीच इन एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन आल्सो. एग्जैक्टली रिटन इन भगवत गीता. क्या हिंदी में क्या लिखा अभी? कर्म कर्म करो करो फल की चिंता मत करो. राइट, कर्म करो फल की चिंता मत करो. मैं भूल गया था. अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए ना, तो आप मेरी ये किताब पढ़ो. दिस दिस बुक है. या दिस बुक भगवत गीता के ऊपर मैंने लिखी है. तो भगवत गीता के आई हैव टेकन श्लोक्स ऑफ भगवत गीता इंक्लूडिंग फल करो चिंता मत करो, कर्म करो चिंता मत करो, फल फल करो नहीं, फल Oh फल तो God, मिल जाएगा. कर्म करो फल की फल की चिंता चिंता मत मत करो. I've taken word by word all these shlokas and I've compared that with English physics. And I've given you exact combination to prove to you it's the same. Law of attraction and physics is the same. It's not versus. It's the same. Okay? फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा. हाँ, अपने आप मतलब हाँ, थोड़ा एफर्मेशन करो प्यार से. मतलब लोग बोलेंगे इंदुर मैम ने बोला था अपने आप मिल जाएगा, आया नहीं अभी तक. एफर्मेशन करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती पता है. चला. पता चलो मेल आ गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर जॉब के लिए कैसे करूं? लर्निंग 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 लर्निंग. ओके, लर्निंग. यूट्यूब पे वो लर्निंग कर रहे हैं. हाउ डू यू अट्रैक्ट जॉब? अफर्मेशन बनाइए जॉब के लिए, अप्लाई करिए. पहले तो अफर्मेशन बनाइए, सोच लीजिए कैसी जॉब चाहिए, कितने सैलरी वाली चाहिए, किस टाइप की कंपनी में चाहिए. और उसके बाद में अच्छे से एक अफर्मेशन बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए, वाटर बॉटल टेक्निक करिए. और उसके बाद में स्टार्ट अप्लाइंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्ट फाइन ट्यूनिंग योर स्किल्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे अगर जगह इंटरव्यू आप फेल कर देते हैं, तो आप आइए लिखिए कि क्यों फेल किए, और वो एरिया दैट मीन्स आपका वीक है, तो जाके आप उसको इम्प्रोवाइज करिए. एक एग्जांपल देती हूँ. हमारे एक लड़की है जिसको काफी दिनों से जॉब नहीं मिल रही थी, एंड वी वर लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट फॉर अस. सो वी थॉट विल ऑफर अ जॉब टू हर, एंड शी वाज we thought she was qualified enough to work with us. So we interacted with her, and during the interaction we realized that she doesn't have job for 2 years now. बट वो लड़की 2 साल से उसने अपनी स्किल्स फाइन ट्यून तो छोड़िए, जो स्किल्स उसको गलत लिखी आती हुई थी थी. वो स्किल्स भी उन्होंने रिटेन नहीं करी थी. तो मतलब कंप्यूटर का यूज भी उनको नहीं करने आ रहा था, जबकि वो काफी सीनियर लेडी है, काफी यूज किया है उन्होंने, उन्हें वो भी नहीं आ रहा था. तो दैट इटसेल्फ इज टेलिंग द यूनिवर्स दैट मुझे जॉब नहीं करना है. तो आपको अगर जॉब करना है तो अपनी स्किल्स को फाइन ट्यून करिए. माई 12-year-old डॉटर नेवर वांट्स टू स्टडी, प्लीज एडवाइस. बहुत अच्छा एडवाइस इसमें है. हमारे एक सर हैं डॉक्टर सुधीर, और उन्होंने हमको एक बहुत अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सिखाई थी. रात को जब आपकी बेटी सो रही है, तो आपको जब वो पूरी सो जाए नींद में एकदम अच्छे से, 12-1 बजे, मे बी 2 बजे, आपको उठ के उसके कान में जाके बोलना है, यू लव स्टडीज. हल्के से. धीरे से उठा मत देना नींद में से. यू लव स्टडीज, यू लव स्टडीज, तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो. ये पॉजिटिव एफर्मेशन उसको रात को देना. ये रात भर उसके दिमाग में घूमता है और सबकॉन्शियस में जाता है, फिर काम करता है. दिन भर जब भी आप उससे पढ़ाई के बारे में बात करोगे, आपको उनको ये बार बार कॉन्शियसली बोलना है. क्या बोलना है? यू आर सुपर गुड एट स्टडीज, यू लव स्टडीज. अरे वाह, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट. इतना भी करो, बड़ा चढ़ा के बोलो. के बोलो, बहुत उसको अप्रिशिएट करो फॉर वॉट एवर शी इज. और जैसे उसको रिजल्ट्स भी आते हैं, तो आप उसके रिजल्ट्स भी बहुत अप्रिशिएट करो. वैसे वो 12 ही साल की है, बख्श दो उसको भी. हाँ, मेरे पापा को नहीं बोला ये पहले. Just kidding. Okay, so cute, Jody. Thank you, Satosh. It's very sweet of you to say that. Raman again. Uh,
Start day with your morning affirmations music. Okay, so he's given you that answer there. Very good answer, Raman. Amazing. Next point. Good evening, sir. Hello, everyone. Yes, hi, Sanika. Sheetal, I had the final. Hold on, what happened to this? Yes, I had the final round of the interview on 25th of February. I think my interview has cleared, but till now the call to join has not come. Please help me. ओके नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हटाओ. बहुत सिंपल है अगर आपको लग रहा है इफ योर इंटरव्यू वाज क्लियर यू हैव क्लियर्ड इट देन बिलीव ट्रस्ट एंड जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स if it has to happen it will happen and remember as my guru Nitesh Khatri says there are no mistakes in the universe so if it's supposed to happen it will happen if not you'll get a better offer simple Focus on the end result. I have already got the job. Don't get so focused on this process that I have got this job. this job Maybe universe is preparing you for the ideal job through this job. I have no idea. Always focus on the end result. I have already got the job. I have already got the job. This job, next interview, doesn't matter at all. Okay, it's like when you're going to find a guy for marriage, you see multiple guys, or if you're a boy and you're seeing girls for arranged marriage with your family, you see multiple girls. And when you're going through arranged marriage, the moment you get stuck saying, will she say yes, will he say yes, now you're Anxiety. completely obsessed and you're like going through anxiety, and then you're telling your parents, I don't want to see the next guy, I don't want to see the next girl, because we are so focused on one person, we forget the end result. Okay, so focus on end result. We're done. Okay, yes, 5:31. Sir, job ke liye, I think we just answered the question for job. Answered for you. Yes. While doing hope nope no, mind diverts what to do, sir. Oh, very simple. Do it loudly, what Indu says. Do it loudly simple बहुत आसान है. दिमाग में मत करो. माइंड दिमाग और भटकता है. घूम रहा है तो घूम रहा है डोंट बीट योरसेल्फ फॉर दैट ओके वापस ले आओ वापस होप नोट करना शुरू करो Yes. Doesn't really matter. Even I'm not 100% focused, right? We are not 100% focused. दिमाग कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट होता है. as doctor Mind is a monkey. Okay, so we'll take 2-3 questions more. Sir and madam, if someone judges about your appearance and says negative things, how to ignore it? simple just ignore it say okay thank you thanks for the input Thanks for the input. There's one more way. good Accept करो अपने आप को. मैं अब कोई मुझे जज करता है मैं गंजा हूँ. भाई हूँ. Thank you for saying the reality. हाँ भाई गंजा हूँ. अब कोई बोलता है तुम सावले हो. हाँ भाई हूँ. अभी फिलहाल नहीं दिख रहा हूँ. मैंने कुछ फिल्टर लगा रखे हैं जिससे थोड़ा ज्यादा गोरा दिख रहा हूँ. बट सावला हूँ. क्या फर्क पड़ता है? काला हूँ. क्या फर्क पड़ता है? छोटा हूँ. Like I'm short in height actually. Some people may think I'm very tall. I'm not. I'm 5'5". I'm short. Accept yourself. Love yourself the way you are. Then you won't feel worried about other people's judgment, right? You always say that. I always say that because I feel that if you have not accepted, then in reflection you will see people commenting on it. If you have accepted yourself the way you are, then nobody will comment on it. Simple. Perfect. I think we'll take one last question of Sudeepa. If your spiritual guru says that something is not in your destiny, then shall I still do the affirmation, as they say, when sometimes God does not give you something means it's not good for you? Good question. Sahil wala. It's a good question, Sudeepa. If your spiritual guru is saying that it is not in your destiny, that means you fought for it and you are not getting it. Then I would also drop that Attachment. मतलब हमारे जो गुरु है साहिल वो हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई भी काम करने में अगर 2 या 3 बार दिक्कत आ जाती है मतलब as small as meeting him we were trying to meet him and 2-3 times it happened that we couldn't meet him We had to keep rescheduling. we had to keep तीसरी बार he said इंदु छोड़ दे अभी थोड़े दिनों के बाद में देखेंगे एंड देन वी ड्रॉप्ड इट एंड देन उसके बाद में मैं 2-3 महीने बाद में जब कनेक्ट करी तो एक ही दिन में हमारी तीनों का टाइमिंग मैच हो गया और हम तीनों जन आराम से मिल लिए सो ही सेज दैट अगर कुछ डिफिकल्ट आ रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट मेंट टू हैपन जस्ट लीव इट so I would say you agree with your spiritual guru drop the attachment At the same time, we don't know whether it's in your destiny or not. Maybe it'll happen later. Like she said, it doesn't mean that we were not destined to meet Sahil forever. but Just for drop now. the attachment Just for now, drop the attachment. When it has to happen, right time, it'll happen again. So feel good, and maybe after a month you can start your affirmations again. and it will just happen then you won't have to work on it if it is supposed to happen it will just happen but right now what he or she is suggesting you is drop the attachment Perfect. I'll give you a very good example. In one platinum member right now, recently, you don't know about this. I got the message 2 days before. There's this one lady, I'll not tell you her name because it's confidential detail, but she was trying to get her partner back in her life, someone whom she had broken up with. Very attached, very, very attached. Why is it not happening? Why is it not happening? Finally, for about 6 months, I said, drop the attachment. She did not.
Finally, after a lot of painful experience, she said, okay, I'm not dropping my attachment. The moment she dropped her attachment, 1 month after that, this guy approaches her. And now he's back in her life. Yeah. Wow. So 2 days got a message. I got a message saying, "Sir, thank you so much. I finally dropped my attachment and I got the result." So sometimes you get the result just by dropping attachment. But remember, don't drop the attachment in order to get the result, because universe you cannot manipulate like that. Then you have not dropped that. Then you've not dropped the attachment. Just drop it. Just Everyone drop take your hands like this. Drop the attachment. Okay. Perfect. I think it's 5:35. It's time for us to leave now. Thank you very much, everyone. I hope you got a lot of value in today's program. I would love to be more with you. So I'm not letting you go. Same day. We will do same again. Okay. So we'll do more Q&A tomorrow, 5 p.m. again. I'll see you soon. Are we 100% doing tomorrow? We have something tomorrow. No? Okay, done. Tomorrow evening, 5 p.m. We'll come again. We'll see you once again for more questions. And in the meantime, I would love to go more in details with you, because question answers will only give you, क्या बोलते हैं ना, एक सेरेडॉन, हाँ. right? एक अभी दवाई दे दी, सर दर्द खत्म हो गया. But if you really want to work on the root frequency with me, the root level, come to this course. It's changed my life. My entire life works on it. I'll see you during the course so that I can help you really remove negative frequency by practicing with me. In case you're attending today's program, everyone type in I promise that you'll attend the entire 3 hours. At the end of 3 hours, there's a very special experience of clearing your negative energy. If you don't clear your negative energy, the first 2.5 hours is all about creating positive energy. You, not just learning, but literally creating. But after creating 2.5 hours of positive energy, if that negative energy is still inside you, It will not work. it will not work. So जाने के पहले I want you to clear that negative energy. So that last half an hour, don't miss it. So how many of you promise it? When you're attending today, you'll attend the entire 3 hours. Type in I promise in the chat window now. With that, thank you very much. Had a great time talking to all of you. इंदु मैम को बोलो आते रहो, बड़ी मुश्किल से हमको इनको लाना पड़ता है. I'll see you soon, guys. With that, take care. Bye-bye.